Hey, how are you? Today I have a preposition for you, and that preposition is owing to. Owing to, which means because of. तो आप because of की जगह owing to का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? So थोड़ा सा less common है, you can use it. It'll make you stand out, right? Alright, so how do we use it? इसका मतलब क्या है? Because of. Exact meaning, because of का जो जैसे यूज करते हैं वैसे आप owing to यूज कर सकते हैं. I'll make a few sentences so that you'll understand it and you'll remember it. Okay, so कोरोना हुआ था. कोरोना के चक्कर में सारे जो ट्रेन्स थे वो सारे बंद हो गए. So हम कैसे बोलेंगे? All the trains were cancelled owing to coronavirus. Right? I'll give you one more example. मान लीजिए आपकी ट्रेन मिस हो गई क्योंकि हाईवे पे बहुत ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा हद से ट्रैफिक था, जिसकी वजह से आप लेट हो गए और आपकी ट्रेन मिस हो गई. तो आप बोलेंगे आई मिस्ड माई ट्रेन owing to the heavy and unexpected traffic on the highway. Okay, did I make it easy for you? Say yes. Okay. Can you use it now? Say yes. Good. So what you can do is you can use this preposition and make a sentence out of it and write it in the comment section, and I'll give you feedback. I'll tell you if it's right or wrong, but I'm sure you'll get it right. Also, if you learned something and I've simplified it for you, hit the like button. Do consider subscribing to this channel so that we can help you. I want you to help me help people by telling more people about my videos and my work so that everybody can be benefited, ताकि हम साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हम सभी आगे बढ़ें और अपने देश का नाम रोशन करें. एंड अगर आप और सीखना चाहते हैं, अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप अपनी वोकैबुलरी को, अपने राइटिंग स्किल्स को, आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसे प्रोफेशनल लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ हमारी मदद लीजिए एंड विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू. यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन box. And on that note, I'll sign off. You take care of yourself and have a beautiful day ahead. Amit Dubey saying bye bye.